हेलो एवरीवन। इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होती है? व्हाट इज इंडेफिनेट प्रोनाउन एंड हाउ टू यूज एंड आइडेंटिफाई इन रीडिंग ड्यूरिंग द रीडिंग ऑफ एनी चैप्टर एंड हाउ टू यूज इंडेफिनेट प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होती है, हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सेंटेंस में इसको कैसे यूज करते हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। What is indefinite pronoun? It is important or not? Indefinite pronoun is very important because it refers to any person, amount or things in a particular. क्योंकि जो pronoun indefinite pronoun होती है वो एक अनिश्चित चीज को प्रेजेंट करती है। जैसे कोई आ गया, कोई चला गया, सब कुछ ले आओ। इसमें एक जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होती है वो एक स्पेसिफिक पर्सन को डिनोट नहीं करती है। ये जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये इंडेफिनिट पर्सन को बताती है। अनिश्चित सर्वनाम इसको हिंदी में कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं जो सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। देयर आर मेनी इंडेफिनिट प्रोनाउंस व्हिच आर यूज्ड इन अ सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, एवरीवन, for example, everyone, everything, something, nothing, everybody, somebody, nobody, everyone, someone, and no one, anything, anyone, and anybody, all, any, few, little, others, some, most, many, one, but both, enough, none, others। जो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है ये एक इंडेफिनिट पर्सन को यूज करते हैं। जैसे कि क्लास में कोई स्टूडेंट है, कोई, लेकिन क्लास में सब स्टूडेंट प्रेजेंट है, तो हमने यहाँ पर एक स्पेसिफिक पर्सन को या स्पेसिफिक थिंग्स को हमने यूज नहीं किया है। ये एक अनिश्चित बताता है कि कितने हैं, कैसे हैं, सब हैं, क्या नहीं है। जैसे कोई नहीं है, किसी को भी कुछ नहीं है, सब है। कोई व्यक्ति, कोई कोई चीज, किसी का नेम, जैसे दरवाजे पर कौन आया है। हमें इसमें एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में नहीं पता है, दैट हु गोज ऑन द डोर। तो एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में नहीं बताया जाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, बिकॉज इट टेल्स अबाउट द इंडेफिनिट पर्सन, अमाउंट और थिंग्स। इट डज नॉट टेल अबाउट द पर्टिकुलर things. It does not tell the definite person. It only tells the indefinite person, indefinite thing, indefinite place, indefinite amount. In anyway, these are words here and here. These are words are used as a pronoun, indefinite pronoun. But these words, all, many, few, little, others, some, most, many, one, both, enough, none, one, none other. But these words are used as an adjective in the sentence. For example, one must be attentive to one's studies. कि हर एक को, वन को, अपने आप को एक अटेंटिव होना चाहिए। एवरीवन बिलीव हिम। इन दिस सेंटेंस एवरीवन, प्रत्येक, इट डज नॉट द स्पेसिफिक पर्सन। इट टेल्स अबाउट द एवरीवन, प्रत्येक, हर एक कोई, बिलीव हिम, उस पर विश्वास करता है। एंड द थर्ड एग्जाम्पल इज समबडी हैज स्टोलन माई बुक, कि किसी ने मेरी बुक को चुरा लिया है। किसी ने, लेकिन हमें किसी ने चुराया है, लेकिन हमें उसका नेम नहीं पता है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी ने मेरी बुक को चुरा लिया है। नोबडी,
Nobody is also a indefinite pronoun. In this sentence, nobody, कोई भी नहीं was there. तो यहाँ पर indefinite pronoun is used as is not tell about the specific person. It is only used as an indefinite person because it does not tell any name of any person. It does not tell कि nobody was there, कोई भी नहीं है. And the fifth example is some are born brave, कि कुछ brave पैदा होते हैं, brave पैदा हुए हैं. तो यहाँ पर भी सम कि यहाँ पर सम भी स्पेसिफिक पर्सन या किसी चिल्ड्रन का नेम नहीं बताया है. यहाँ पर भी स्पेसिफिक पर्सन की तरह इसे स्पेसिफिक पर्सन नहीं बताया है. ये यहाँ पर सम और ऐसे यूज हुआ है जैसे इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चित वाचक सर्वनाम की तरह यहाँ पर यूज हुआ है. द सिक्स्थ क्वेश्चन इज फ्यू वर देयर, कि कोई फ्यू वर देयर, कि कोई तो है वहां पर, कुछ थोड़ा अन्य कुछ लोग या थोड़े, कोई तो है, कुछ तो है वहां पर. एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज ओनली इब्राहिम कैन रिमेन है यार. ओनली इब्राहिम यहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन अदर्स, बाकी कौन, अदर्स, दूसरे कौन से अदर्स, इब्राहिम को छोड़कर सब घर जा सकते हैं, सिर्फ इब्राहिम यहीं पर रहेंगे. तो ये यहाँ पर one, everyone, somebody, nobody, some, few, and others are used as an indefinite pronoun because these are words not tell about the pronoun in the specific person. It only tells about the indefinite person and indefinite things. So these pronouns are used as indefinite pronoun. Indefinite pronoun वो होती है जो किसी के बारे में खास जानकारी नहीं देती है. ये जो है indefinite pronoun, ये स्पेसिफिक चीजों के बारे में नहीं बताती है, अनिश्चित होते हैं क्योंकि इसके बारे में सही पता नहीं होता है कि कोई गेट पर है, लेकिन हमें नहीं पता है कि गर्ल है, बॉय है, ओल्ड, यंग, लेकिन कोई है. लेकिन कितने हैं, प्लूरल नंबर में है या सिंगुलर नंबर में, ये हम नहीं जानते, लेकिन कोई है. तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं. लेकिन ये कि नोट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट द वर्ड्स all, some, both, many, any, most, few, many, little, one, other, another are used as an adjective. These are used as an adjective in the sentence. They are also called as an indefinite pronoun, but they are also used with the like as an adjective. कि इनको भी हम अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं, लेकिन ये एडजेक्टिव की तरह, विशेषण की तरह सेंटेंस में यूज किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट सेंटेंस इज आई विल टेक यू देयर वन डे. इन दिस सेंटेंस here is one, but one is used before the day, like adjective a d j, एडजेक्टिव की तरह यहाँ पर यूज हुआ है. द सेकंड क्वेश्चन इज एनी फूल कैन डू दिस, क्या कोई फूल जो मूर्ख होता है इसको कर सकता है, कोई एनी फूल. सो एनी फूल इज एन कॉमन एडजेक्टिव, common noun, and before the common noun is used as an adjective because it tells about the any food. So this in the sentence, like in example 2, any is used as an adjective. The third example is he is a man of few words. In this sentence, we can say the few is used before the adjective and we before the word. So these is used as a adjective. Some milk was split. The here is some is also as used as a adjective. Milk is a noun, so
Some indefinite pronoun some is used as adjective before the noun milk. The last example is many criminals were arrested. Here criminals are the noun is noun, and many is used also as an adjective before the word noun. So these words are used as in the as an adjective before these words. We can use like this in the sentence when we use adjective before when we use the indefinite pronoun words like adjective. हम indefinite pronoun को विशेषण की तरह भी यूज कर सकते हैं. नोट 1. Singular verb and singular pronoun are used for indefinite pronouns. जो हमारे सिंगुलर वर्ब होते हैं वर्ब एंड सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्रोनाउन आर यूज्ड टू एन इंडेफिनिट प्रोनाउंस. हमारे सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर प्रोनाउन ही यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल everybody, somebody, anybody, nobody. These are used as a singular pronoun in the sentence. ये सिंगुलर प्रोनाउन के साथ यूज की जाती है. फॉर एग्जाम्पल he, him, his and himself is the third person pronoun, but this pronoun is singular pronoun. And everybody, someone, anyone, no one. For these words, the singular pronoun are used with them. They, them, their, theirs, themselves is not used with these words because they are the plural pronoun of the third person. So it is wrong. He, him, his and himself is a pronoun of a third person that is considered to be the singular. So these words are used with these indefinite pronouns. जो ये he, him, his, himself ये थर्ड पर्सन के pronoun हैं जो सिंगुलर कंसिडर किए जाते हैं. Everybody, somebody, anybody, nobody. Everybody, someone, anyone, no one. These are the indefinite pronouns that is used before the singular pronoun, but the plural pronoun are not used in the sentence. तो जब हम किसी सेंटेंस में इसको यूज करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें सिंगुलर वर्ब के साथ यूज करना है या हमें प्लूरल वर्ब के साथ यूज करना है. अगर हमने प्लूरल वर्ब के साथ यूज किया है इंडेफिनिट प्रोनाउन को तो ये हमारा रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा. अदरवाइज हमने इसको सिंगुलर प्रोनाउन के साथ यूज किया तो ये हमारा राइट आंसर रहेगा. जब भी हम कभी हम अपनी बुक की रीडिंग करते हैं अगर उसमें ऐसे वर्ड्स आ जाए जैसे somebody, everybody के आगे अगर they, them, theirs, themselves ये सब आ जाए तो ये रॉन्ग माना जाएगा क्योंकि ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं ये हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होते हैं वो भी थर्ड पर्सन. नॉट फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के साथ यूज नहीं किए जाते हैं और प्लूरल में भी यूज नहीं किए जाते हैं. ये सिर्फ थर्ड पर्सन में यूज किए जाते हैं. नाउ अब एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग यहाँ पर थिंग आएगा. तो एनीथिंग इट इज यूज्ड फॉर एन थर्ड पर्सन इट बिकॉज व्हेन वी यूज एनीथिंग फॉर इट क्योंकि जो एवरीथिंग होता है कोई चीज होती है हम उसके लिए इट का यूज करते हैं. तो यहाँ पर अगर हमने एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग के साथ अगर हमने यहाँ पर प्रोनाउन यूज किया प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल तो वो गलत कंसिडर किया जाता है क्योंकि किसी भी थिंग के लिए हम इट का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1. Everyone has his idea on the subject. So everyone has his idea. So in this sentence जो his है हमारा वो सिंगुलर प्रोनाउन के साथ यूज किया गया है इन दिस सेंटेंस. इफ एनीबडी हेल्प मी I shall be thankful to him. In this sentence anybody is also used
with the singular verb him. So I shall be thankful to him. And the third example is anybody can win the prize of if he tries for it. Everybody can win the prize if he tries for it. Everyone is everyone is also used as a indefinite pronoun. If he, everyone is used for the word he के लिए यहाँ पर यूज हुआ है. हमने यहाँ पर अगर हम यहाँ पर दियर यूज करते हैं दियर ट्राइज फॉर इट या दे ट्राइज फॉर इट them tries for it, it is considered as a wrong sentence because indefinite pronoun is always used as a singular pronoun, so this is the right sentence. The fourth example is everything has its own limitation कि हर एक चीज के पास अपनी limitation होती है. So in this sentence limitation is used with the indefinite pronoun थर्ड पर्सन क्योंकि थिंग के लिए इट का यूज किया जाता है कहीं पर भी, तो ये राइट सेंटेंस है. अदरवाइज हम यहाँ पर वी अस माई या हम अदरवाइज कोई सा भी प्रोनाउन यूज करते हैं तो वो रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा. So when we use the indefinite pronoun in a sentence, focus on this that indefinite pronoun is always used with the singular verb and singular pronoun.